Hello everyone, a very good morning to all of you. Today I am going to start one of our important topic, that is carbon and its compound, which is very important regarding our NDA and CTS examination. So this chapter is from class 10 standard, where we have to study about a particular element, that is carbon, and then we will start to study about all the components or all the compounds it will form. They are known as organic compound. Okay, now the first thing, what is the atomic number of carbon? Atomic number of carbon is 6 and its mass is 12. Alright. And its electronic configuration that we have studied in our class 10 standard is 2.4. So it has all over 6 electron. The outermost electron is 4 and the electron that is situated in the inner orbital is 2. Alright. And it's belong to 14 group. You can see in your periodic table. Now, let's talk about the valency, the very important thing, the valency of carbon. The valency of carbon is 4. Therefore, it is known as tetravalent element, tetravalent element or atom. Okay. Now, why we consider the valency of carbon as 4? Let's understand. What is valency? What is valency? Let me tell you, valency is not the outermost electron. It is not only the outermost electron. It is the amount of electron required in the outermost shell to complete the octet of an atom. Say, what is the valency of hydrogen? What is the valency of nitrogen? What is the valency of oxygen? So first, we will see the atomic number of hydrogen is 1, nitrogen is 7, and oxygen is 8. Okay. So one and only configuration of hydrogen is 1. It has configuration as 2.5 and it has configuration as 2.6. Now, hydrogen has only one electron. So its valency is 1. It's belong to the first group. Why its valency is 1? Because it's require one more electron. Complete is duplet. Complete its duplet because duplet is its nearest noble gas configuration. Likewise, in case of nitrogen, nitrogen required further 3 electron to complete its octet and gain an electronic configuration like 2.8, that is neon configuration. That is neon configuration. This is the nearest noble gas of nitrogen. Likewise, if we see oxygen, it has 6 electron. So 6 is not the valency of oxygen. Oxygen required 2 more electron complete its octet. Likewise, it again gave the nearest noble gas configuration. Therefore, the valency of oxygen is 2. The valency of nitrogen is 3. The valency of hydrogen is 1. So more precisely, we can say the valency of oxygen is -2 because it's acquiring its octet by gaining 2 electron, not by losing 2 electron. And since electrons are negatively charged particle, we have to understand proton is a positively charged particle and electrons are negatively charged particle. So whenever an atom is gaining electron, the valency will be minus that particular electron. तो nitrogen का valency हो गया minus, and it is not always like that. Okay. So if we talk about carbon, if we talk about carbon, 6 atomic number 2.4. So we can say carbon has two possibility to acquire its state. Like carbon can be 2.8 and carbon can be 2 also. Carbon can be 2.8. How it can be 2.8? It can gain its configuration as 2.8 by accepting 4 electron. By accepting 4 electron. And it can gain duplet. This is octet. By losing 4 electron. Okay.
First, we have to see the possibility. So carbon has 6 electron, its configuration is 2.4, so it has 4 outermost electron, that should be 8 if we talk about octet, and that can be 2 if we talk about duplet. But whenever we see the atomic model of a mini atom, we do have the basic idea that there is a nucleus at the center of an atom, and these are the shell part or orbit, we can say, where electrons are revolving. So for carbon, it has 6 proton. It has 6 proton plus 6 neutron in its center, and it has 2 electron in the first shell and 4 electron, 1, 2, 3, 4 electron in its outermost shell. So we have to understand, if carbon has a 4 electron, okay, it will gain 2.8 electronic configuration, but this is not possible because it has all total of 6 proton. So 6 proton, which is positive, can attract 6 electron. But if we SF 4 electron, then 6 proton have to attract how many electron as a total? 10 electron, which is not possible. For 6 proton system that are situated in the nucleus, they cannot accept. Here in the outermost shell, you have to provide 4 more electron, right? तो इन 4 electron को ये क्या कर रहा है? Additionally attract कर रहा है. तो ऐसा system stable नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because the charge of a proton is exactly equal to charge of an electron. मतलब एक electron को एक ही proton attract कर सकता है. एक से ज्यादा दो, दो से ज्यादा तीन. It's depend upon the system, it depend upon the size of an atom, and depend upon the effective nuclear charge. But in case of carbon, what I am saying, 6 proton cannot attract 10 electron. Likewise, it is a configuration of carbon. If you want to lose 4 electron, if you want to lose the outermost 4 electron, you have to remove the outermost electron against 6 proton. So kitna baki reh jayega? 2 electron will be the remaining, which is not also possible. For carbon, losing 4 electron and gaining 4 electron both are not possible. Therefore, first let's see the electronic dot structure of carbon. This is the electronic dot structure, and this is the idea that you should have in your mind. Carbon के outermost shell पे 4 electron घूम रहे हैं, and you cannot give 4 electron completely, or you cannot remove 4 electron completely. Now, carbon believes in sharing, because for carbon, sharing is caring. How do it complete its octet? It do share electron. You see, और का electron, not its own. This electron, let me represent this electron with some other sign. Okay, suppose these are electron of hydrogen. ये जो electron है, ये hydrogen के है. So it is simply sharing the electron of hydrogen. So likewise, it's completing its octet, because now towards carbon, how many contribution of electron are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in this way, carbon achieving its octet. So its valency will be 4. See, what is the versatile nature of carbon? So carbon basically has 2 versatile nature. One is valency and another is catenation. Carbon is a non-metal, has an atomic number 6. Versatile nature of carbon. First, carbon has the ability to form bond with the other carbon atoms, due to which it can form large molecule. And this phenomenon or this property is known as catenation property. We will talk about this later. Whenever we will study about the compounds of carbon, we will understand catenation. Okay? Carbon is tetravalent. What is the valency of carbon? Carbon is tetravalent. This is tetravalent, which means it has a valency of 4. It can form bonds with 4 other atoms. Okay, other atom जैसे अभी अभी दिखाया, कार्बन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है. कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. कार्बन can form continuous chain with its own atom.
It is known for the versatility due to which it is capable of forming a large number of organic compound. Okay, so you have to see this, you have to note this. Okay. Now we have studied, we already have talked about how to find valency. You can note the rules how to find valency. The valency is the combining capacity of an atom to fulfill its octet. Okay, it is a combining capacity. Calculate valency by counting the number of electrons in the outer shell of the atom. First, see the rule. पहले क्या करना है हमको आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करना है जैसे सल्फर को ले लो आई एम कंसिडरिंग सल्फर okay sulfur what is an atomic number sulfur 16 atomic number mass is 32 electronic configuration will be 2.8.6 so I will first observe the outermost electron that is 6 now read the next point. If the number of electrons is 4 or fewer, then the valency in the outer shell is equal to the number of electrons. मतलब जैसे कि सोडियम, जैसे कि मैग्नीशियम को ही पकड़ लो, मैग्नीशियम को कंसीडर करो, is a 12, 2.8.2. This is the configuration. So it has 2 electron, right? So its valency will be 2. तो इसको ऐसे याद कर सकते हो अगर आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है 3 4 है then that is going to be its valency respective valency उसी को ही ऐसे लिखा है if the number of electron is 4 or fewer then that is going to be their respective valency but if the number of outermost electron is greater than 4 then the valency in the outer shell is equal to 8 minus the number of electrons. This is the outermost electron of sulfur. तो इसका valency क्या है? दो तरीके से you can think 8 minus 6 that is 2. Yes, 2 will be the valency. ये 2 है valency sulfur का. कैसे मिला? 8 minus 6 करके मिला. और क्या कर सकते हो? You can think how many electron it required to complete its octet. अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे then the configuration will be 2.8.8 right it is very simple always think about octet but it's not like that अगर 2 है यहाँ पे हम 6 देके इसका octet करेंगे ऐसा नहीं हो सकता because it is not easy to accept 6 electron in the outermost so it will be easier to lose this 2 electron okay it will be easier to lose this first electron second electron third electron but जैसे कि अभी अभी मैंने बोला it will be difficult to lose 4 electron then the element will undergo covalent bond sharing electrons likewise they will achieve their octet okay you have to write the last point also if the number of electrons is greater than 4 then the valency make it valency in the outer shell is equal to 8 minus मतलब subtract करना है 8 से 8 minus number of electrons just try let me tell you the first thing you should have the basic concept regarding the periodic table you have to know up to 20 element that is calcium its atomic number atomic mass and electronic configuration as well if you know the electronic configuration then only it will be easier to find out valency or any other property of an element okay so let's try this first you have to try this element given atom we already have talked about oxygen so I think you are able to do oxygen we already have talked about nitrogen so let's talk about phosphorus C. That is P stands for phosphorus. Atomic number is 15. Electronic configuration is phosphorus. Electronic configuration is this. So how many electron it has? 5. So it is greater than 4. If it has greater than 4 electron, then what we will do? We will subtract it from 8. That is 3.
So valency is 3. So you have to also think that phosphorus का जो valency है, it's resemble with nitrogen. Am I right? So they both belong to the 15 group. तो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं. तो नाइट्रोजन हैज वैलेंसी 3, फॉस्फोरस का भी वैलेंसी 3 है. तो लेट मी आल्सो टेल यू, this is not the only valency of phosphorus. Phosphorus can be pentavalent also. तो you have to note that मतलब point. इसका वैलेंसी 5 भी हो सकता है. It can a valency of 5 and वैलेंसी 3 and 5. अब ये कैसे पता चलेगा? ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा. बिकॉज 5 क्यों हो सकता है, इसका रीजन है it has vacant d orbital. So these things are not included in class 10 standard. These are from 11 standard. तो ये जो d है, it is an orbital. जैसे k, l, m, n, ये जो shells होते हैं, जिसको shells होते हैं ना, जिसको हम orbital भी बोलते हैं, तो इसका extended orbital है. That is the reason you need to just remember that thing only. तो phosphorus का valency 3 है. That will be correct. तो इसका 5 भी हो सकता है. And if you are thinking नाइट्रोजन का भी 5 हो सकता है क्या? नो, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट. तो ये ट्राइवेलेंट भी हो सकता है और पेंटावेलेंट भी हो सकता है. तो यू हैव टू नोट दैट. क्या किया मैंने? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 8 minus 5 3. वी हैव द वैलेंस, तो इट्स वैलेंसी इज 3. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि फॉस्फोरस का वैलेंसी 5 भी हो सकता है, which is also known as pentavalent. 4 होने से we tell as tetravalent, 5 होने से pentavalent. Now let's talk about neon, and you have to do it by yourself about argon. Okay, this is neon. What is the atomic number of neon? 10. What is the electronic configuration of neon? 2. Oh, see, it's already have 8 electron. Now, what is valency? You have to think about the definition also. Valence is the binding capacity. अब जैसे कि इसका octet already filled है, it do not have any binding capacity. It do not have any urge to accept or lose electron. Therefore, its valency will be 0. Or you can also say 8 minus 8, subtracting 8 from it, 0. तो हर एक noble gas का you can say valency is 0. मतलब at least you can say neon. हीलियम का भी कितना है? 0 है वैलेंसी. हीलियम का भी 0, नियॉन का भी 0, आर्गन का भी 0. करके देखना. क्रिप्टॉन का भी 0 होता है, बट कभी कभी रिएक्ट कर भी देता है. we do have some compounds of krypton also, that belongs to exceptional molecules. Okay, noble gas do not have any urge to accept or lose electron, therefore they have 0 valency. What about fluorine? Fluorine. Atomic number 7. 2, 5 is the electronic configuration. So 5 required how many electron? 3 electron, or 8 minus 5 is, oh, wait. No, sorry. It has 9, okay. The 9, atomic number 2.7. 7 is the outermost electron, yes. So it requires how many electron to complete its octet? It requires only 1 electron. You can say it like that, or 8 minus 7, 1. I'm just subtracting the outermost electron. Are you getting my point? Atomic number 9, electronic configuration 2.7. So 8 minus 7, 1. So this is the valency of fluorine. So fluorine do not have multiple valency. We do have exception, but you just only need to know its valency is 1. What about calcium? Atomic number is 20. With configuration will be this. It has 2 electrons. So you will simply lose this 2 electron to achieve this octet.
अगर 2 है तो यही होगा वैलेंसी, विल बी 2। ओके, और एक ट्राई करो। लेट्स ट्राई एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम। तो कैल्शियम वैलेंसी इज 2। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? 13। Atomic number of aluminum 13. So it has 3 outermost electron. Therefore, valency is also 3. So more precisely, the valency will be plus 3. So more precisely, ये metal है ना, इसका valency plus 2 होगा. Always remember, metal has positive valency. Non-metal may have neutral valency or negative valency. Okay. Now we will start hydrocarbon and its classification. Okay. Okay. First, what is hydrocarbon? What is carbon? Hydrocarbon, the compounds of are known as compounds of hydrogen and carbon are known as hydrocarbon. Then write classification. Now we will study simple classification, not the complicated one. Classification. तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है और जिस कंपाउंड में कार्बन है, सिंपल, हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड्स है, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन में तुम लोगों को क्या समझना है, क्या पढ़ना है? तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. One is aliphatic, oblique, open chain. Aliphatic और open chain. नेक्स्ट को बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड. क्लोज चेन को और क्या बोलते हैं पता है? एसाइक्लिक. मतलब जो साइक्लिक ने वेट 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 इसको एलिसाइक्लिक, इसको बोल सकते हैं हम क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड. इसको एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, कोई बात नहीं. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर मेनली क्लासिफाइड एज एलिफेटिक और साइक्लिक. मतलब ओपन चेन में है एक और एक क्लोज चेन में है, ठीक है. एलिफेटिक में जो है दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज saturated and unsaturated. पहले ये लिखो एलिफेटिक. एलिफेटिक में कौन है? सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड. इन्हीं सेचुरेटेड में एग्जांपल आते हैं अल्केन्स.
और यहाँ पे आते हैं एल्केन्स और साइक्लोएल्केन। एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और अनसेचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन, वाई नहीं। क्लोज चेन में आते हैं होमोसाइक्लिक, जिस साइकिल में सिर्फ कार्बन ही हो, कार्बन एटम से ही जो साइकिल बना है उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हम्म हम्म होमोसाइक्लिक में क्या हो सकता है? एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका एक एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। हाँ, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। लाइकवाइज हेटेरोसाइक्लिक में भी हो सकता है। ओके, ओके। टाइप में आई एम जस्ट राइटिंग एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। एरोमेटिक में मैंने बेंजीन लिखा है। नॉन एरोमेटिक में आई एम राइटिंग साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन। ओके, तो यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक है, यहाँ पे आई एम राइटिंग ए कंपाउंड जो यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आई एम राइटिंग ए कंपाउंड, दिस इज नोन एज फ्यूरन। फ्यूरन, फ्यूरन हो सकता है, pyridine हो सकता है। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड बिलोंग्स टू हेटेरोसाइक्लिक, मतलब इस रिंग में देयर आर 4 कार्बन along with a foreign atom, that is oxygen. Oxygen already in the ring. So this ring is not only formed by carbon atom, one oxygen, 4 carbon atom. Furan हो सकता है। Example ये लिखो। तो इसका नॉन एरोमेटिक का भी सिंपल एग्जांपल ऑक्सीजन, ये हो सकता है। ये दोनों कंपाउंड बनाओ, किसका? एक एरोमेटिक इसका एग्जांपल और एक इसका एग्जांपल नॉन एरोमेटिक। इफ यू वांट टू नो इन दोनों का एग्जांपल क्या है एरोमेटिक का, यहाँ पे बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, and this is cyclobutadiene. Okay, we will study about this compound later. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन डन। Now first we will study about the saturated hydrocarbon, that is alkane. Basically alkane के बारे में पढ़ेंगे। तो what are saturated?
Saturated अगर तुमको simply याद रखना है, then you have to remember जहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बोन है, मतलब कार्बन किसी के साथ भी डबल बोन नहीं कर रहा है, सिर्फ के साथ क्या कर रहा है, सिंगल बोन कर रहा है, and this is termed as saturated hydrocarbon. So let's read once. Saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which each carbon atom in the molecule forms four single covalent bond with other atom. Okay, चाहे कार्बन के साथ हो चाहे हाइड्रोजन के साथ हो, जैसे मीथेन, एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन. ओके, मीथेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन है, मीथेन, द वेरी फर्स्ट कंपाउंड, द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल, दैट इज CH4. इसका सेकेंड वाला मॉलिक्यूल क्या है, इथेन, C2H6. ये कैसे लिखेंगे हम सीखेंगे, पहले देखो ड्रॉ करते हैं. तो हमेशा क्या करना है, पहले कार्बन को ड्रॉ करना है, और यू हैव टू रिमेंबर द कार्बन्स वैलेंसी इज 4. 4 वैलेंसी मतलब 4 हाथ है इसमें, राइट लेफ्ट अप डाउन, इट हैज 4 हैंड, right left up down. Okay, so in these 4 hands there are 4 hydrogen atom respectively. In the second molecule there are 2 carbon, right? To first connect this 2 carbon at least with a single bond, first connect with a single bond, then see, one valency of carbon is already satisfied, एक valency already satisfied, तो remaining 3 valency you have to draw. These are the remaining 3 valency. तब कार्बन के पास 4 हाथ है, एक हाथ तो ये है, बाकी ये 3 हाथ है, तो here it will bond with the remaining hydrogen. This way we will draw. जब भी कार्बन किसी के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, then we will say it as saturated hydrocarbon. तो लास्ट में लिखा है hydrocarbons that contain oxygen bonds are alkanes. Let's study about alkanes. Okay? Saturated के बारे में पढ़ेंगे. First we will see about alkane. Alkane. That's name and with ANE. And the general formula is CN H2ISN plus 2. Okay, alkane having this formula, मतलब अगर N क्या हो सकता है, N is 1, 2, 3 so on. मतलब अगर N is 1 तो कार्बन कितना है 1, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 ones are 2 plus 2, that will be 4. So that's it. So this is the first molecular formula of alkane. ठीक है, तो इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा है, हाँ इसका नाम मीथेन क्यों है, यही सब हम सीखेंगे. So you are now going to construct a table. Okay, so first write word root. What does it mean? Word root mean number of carbon atom. Number of carbon atom. Next, structure. And formula, then name. Okay, I think इसका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था. Okay, first construct a table. Word root, structure, formula and name. Word root represent the number of carbon atom in the compound. Then we'll draw the structure, write the formula and then name.
It's all right. I'm again drawing the table. Don't erase because I need large space in the first and second column. This is for name. This is for formula. This is for structure. All right. तो what is word root mean? Number of carbon. तो इसका ही मेंशन होगा इंफॉर्मेशन और रिगार्डिंग दैट इसका नाम मेंशन होगा मतलब एक कार्बन होने से कंपाउंड को क्या बोलते हैं लिसन टू मी एक कार्बन होने से कंपाउंड को क्या बोलते हैं टू कार्बन होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं देन वी विल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर okay now see if you have one carbon in your compound it is said to be METH mate क्या बोलेंगे इसको METH mate अगर you have two carbon इसको बोलेंगे it so you are learning today then you have to remember these things and if you already have learned these things in your class 10 standard then you need to give a revision because these things are very important so you have to know what root first किसी भी organic compound का naming हो IUPAC हो पहले सीखना पड़ेगा how to do in a systematic manner carbon 1 is mid carbon 2 is ETH carbon 3 will be prop PROP अगर carbon 4 है then it's said to be but it is not but okay but is not but this is but हम chemistry में इसको बोलेंगे but okay now let me draw okay let me draw you have one carbon and I'm opening its 4 bone I'm opening its 4 तो एक ही कार्बन है इसका वैलेंसी 4 है तो 4 बोन आर देयर एंड आई विल प्लेस हाइड्रोजन तो क्या प्लेस करेंगे हाइड्रोजन ही प्लेस करेंगे इस जगह पे तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया CH4 see this is very systematic way to learn organic compound तो इससे simplest way नहीं है तो you have to first learn okay then practice so this is structure having formula CH4 जिसका नाम क्या है METH plus ANE methane matlab meat has come from here you have one carbon that's why it is meat and where the ANE has come from this is the alkane ka ANE अब ANE क्या represent करता है ANE सिर्फ यही represent करता है there are only single bond between carbon and carbon okay now let's draw it matlab how many carbon two carbon first carbon bonded with second carbon single bond I will open the remaining valency so you have hydrogen here so what is the formula C2H6 right C2H6 इसको ऐसे भी कर सकते हो C2 तो H क्या होगा 2 2s are 4 plus 2 6 ऐसे भी कर सकते हो तो likewise what will be the second इसका next क्या होगा आएगा say 3 3 होगा 3 2s are ये 2 है ये 3 है 3 2s are 6 plus 2 8 ओके तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं तो इसका नाम क्या पड़ेगा मीथेन इट प्लस ANA मीट प्लस ANA इट प्लस ANA इसका नाम क्या पड़ेगा प्रोपेन प्लीज ड्रॉ प्रोपेन एंड ब्यूटेन को ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो ब्यूटेन प्रोपेन हैज हाउ मेनी कार्बन 3 कार्बन so you see 1 2 3 for this carbon only one valency is satisfied so I will draw 3 valency for this middle carbon there are two already satisfied valency are there so I will draw 2 bond इसके लिए भी एक ही है तो 3 this is the pattern so how many hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 now you can see the formula is this C3H8 name is propane so complete this table up to heptane okay 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 butane next करेंगे butane तो butane को कैसे draw करेंगे you have 4 carbon right
कैसे है 4 कार्बन 1 2 3 4। तो टर्मिनल कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन लगता है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। बीच बीच में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट दिस। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H 4 2s are 8 plus 2 10. This is butane. Butane having formula C4H10 and this is the butane structure. तो इसको बोन ओपन करके भी लिख सकते हो, ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देन इसको ऐसे थोड़ा कंडेंस भी कर सकते हैं हम। फिर से बताती हूँ। तो यू हैव ब्यूटेन ना, तो यू हैव 4 कार्बन 1 2 3 4। So you first connect them at least one single bond. So for this carbon one valence is satisfied, there are 3 remaining valency, इसके लिए 2, इसके लिए 2 and terminal के लिए 3। तो ये तो समझ सकते हो ना, terminal के 3 चाहिए because chain यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं as a CH3, this is CH3, then bone, this is CH2, this is CH2, then bone CH2, then ending with CH3. Now this is butane. As a whole, the formula is C4H10, butane. तो ब्यूट के बाद क्या होगा, if you have 5 carbon, it is said to be pent. If you have 6 carbon, it is said to be hex. 7 carbon, hept. So it is resemble with your trigonometric information, right? जैसे pentagon हो गया, hexagon हो गया. So after but, we will write about 5 carbon that is pent. Pent. 6 carbon hex and 7 carbon that will be hept. So please complete the table. I think you can do it by yourself. So 5 carbon के लिए how many carbon are there? 1 2 3 4 5. पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. What is the formula? C5H12. 5 2s are 10 plus 12, known as pentane. P-E-N-T, pent, A-N-E, ending with A-N-E, pentane. Now see, we have completed saturated hydrocarbon. Now we have unsaturated hydrocarbon, जिसका example मैंने क्या दिया था, alkenes दिया था, alkynes दिया था, और aromatic hydrocarbon भी belong करेंगे। देखो, don't confuse it, बाद में easy हो जाएगा। A hydrocarbon that contains one or more double bond, so it can contain more than one bond, मतलब more than one double bond, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसी को ये अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अनसेचुरेटेड का जनरल फिजिकल मतलब क्या है, जो अब तक सेचुरेटेड नहीं हुआ है, अभी भी बोन को ब्रेक करके यू कैन इंट्रोड्यूस अनदर एटम। ओके, तो अनसेचु ओके, तो फर्स्ट थिंग द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज द मेन थिंग। दिस थिंग्स यू हैव टू राइट फर्स्ट। डबल बॉन्ड आएगा एल्कीन्स में और एल्काइंस में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। Okay, now let's start the table about alkene. एल्कीन का टेबल स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है,
CnH2n minus 2, ट्राई करते हैं. The first thing that comes to your mind, एल्किन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. और तुम एक कार्बन से एल्किन नहीं बना सकते हो. You cannot form alkene or alkyne with one carbon. तो मीट won't exist. There is nothing like methane. मतलब वर्ल्ड में ऐसा कोई केमिकल नहीं है कॉल्ड एज मीथेन मिथाइन. दे विल स्टार्ट फ्रॉम इट. मतलब यू हैव टू कार्बन एंड विल प्लेस डबल बोन इन बिटवीन टू कार्बन. ओके, तो फिर से वर्ड रूल. स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एंड नेम. So you have two carbon, so that is it. See first, the structure will be like, draw two carbon and place double bond in between them. Okay, draw two carbon and place double bond in between them. So what will be the remaining valency of this carbon? The remaining valency of this carbon is 2. क्योंकि 4 है valency, 2 is already occupied, and therefore 2 remaining valency fulfilled with the help of hydrogen. So this is simply C2H4, right? This will be C2H4. So you also can give a try. अगर n की जगह पे 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 2 are 4 minus 2. Or wait. Oh, sorry. Huh? This is not alkyne. This is not alkene. This is alkyne. Alkene. This is not alkyne. Formula will basically CnH twice n. ओके, तो यू कैन गिव ए ट्राई. यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा. अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, that will be 3 2 जा 6. Exactly twice the number of carbon. Okay, name will be right. Ethene, ETHENA. तो पहले क्या था? ETHANA. Now ETHANA. पहले A नहीं था, अब ये नहीं है. So this is the first molecule. The second molecule will be C3. C3 में क्या होता है? PROP, prop. So what will be the name? Propene. The name will be propene. PROP, propene. तो formula पहले try करते हैं. That will be C3H6. Alright? तो कैसे draw करेंगे? C. यहाँ पे देखो. You have 3 carbon. 1, 2, 3. तो इन तीनों में से you will first join any of the 2 carbon with double bond. Any of the 2. इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन double bond सब में नहीं होगा. Only one double bond is there. मतलब यहाँ भी सब में नहीं. इस कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, राइट? इसके लिए ऑलरेडी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही गया. तो हाउ मेनी बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग? 3 बॉन्ड. तो इट्स रिक्वायर ओनली 1 हाइड्रोजन एंड इट्स रिक्वायर 3 हाइड्रोजन. ओके, तो ये स्ट्रक्चर मतलब CH2, इसको कैसे लिख सकते हैं? और CH2 डबल बोन CH सिंगल बोन CH3. This is propene. Okay, try now butene. You have to try now butene. Alkene having formula. What is the formula? CnH twice n. C4, C5, C6. This is but, this is pent, and this is hex. All right. तो ब्यूट से क्या बनेगा? ब्यूट से ब्यूटीन बनेगा, पेंटीन बनेगा. Have you ever heard the name pentene? Yes, one of the ingredient in our cosmetics. Butene, pentene, and hexene. So what is the formula? यहाँ पे प्लेस करो. C4H. 4 2s are 8. This will be C4H8, C5H10, C6H12. So simple formula of
एल्कीन मतलब ब्यूटेन का कर लिया, पेंटेन का कर लिया, हेक्सेन का कर लिया। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ब्यूटेन में देयर आर 4 कार्बन, तो फर्स्ट ड्रॉ 4 कार्बन, 1 2 3 4, फर्स्ट कनेक्ट देम विथ ए सिंगल बोन। अब यहाँ पे डबल बोन देना है तुम लोगों को, तो डबल बोन कहाँ दोगे? तो इट इज प्रिफर्ड हमेशा टर्मिनल में, यहाँ पे डबल बोन होना चाहिए। डबल बोन नहीं तो यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मिडिल पे मत देना। अगर ब्यूटेन लिख रहे हो तो इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे आएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आएगा 3 हाइड्रोजन। राइट, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं। अगर स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है तो ऐसे कर सकते हो गया। दिस इज ब्यूटेन। अब देखो, नाउ सी, what if I tell you can also place double bond between these 2 carbon? तो ये ब्यूटेन होगा कि नहीं? डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन, लेकिन हम पहले हाइड्रोजन दे देते हैं। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो प्रिसाइसली द डबल बॉन्ड इज सिचुएटेड इन द सेकंड कार्बन, तो इसको बोलना पड़ेगा ब्यूट डैश 2 इन। तो ये आईपीसी लिखने का तरीका है, मतलब योर डबल बॉन्ड इज सिचुएटेड एट द सेकंड कार्बन। अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, मतलब ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो दिस ये मॉलिक्यूल ही है। तो ये क्या है? सिंपली ये ब्यूटीन, ये सिंपली ब्यूटीन है और ब्यूट डैश वानिन है। मतलब there is no confusion, you were just mentioning the position, the location of the double bond. This is butene and butanine. तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? मतलब हम ब्यूट टू इन भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, जब ब्यूट टू इन बोले तभी टू इन लिखेंगे, लेकिन सिंस दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों को बोलेंगे एक साथ आइसोमर। अब क्या आइसोमर है ये? पोजीशन आइसोमर। Position isomer. Why? Because you are just changing the position of the double bond. Okay. So likewise, also try pentane. Likewise, also try pentane.